Good morning, dear students. Hope you are safe and sound at your home. Today, we are going to read a chapter from Unit 5, and the name of the chapter is Helen Keller. Helen Keller was a girl who became deaf and blind in the early stages of her childhood. The story tells us how her teacher brought her to her world of knowledge. So let's read and understand the story. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. But one day the baby became ill, and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." So, in the first paragraph, we get to know it was the summertime of the year 1880 and the baby girl was born. किसका जन्म हुआ 1880 में? Baby girl का in the small town named Alabama. In the small town, and the name of the town was Alabama. It is a country in United States of America. So this baby girl was loved by her parents very much. उसके जो parents थे वो उसको बहुत प्यार करते थे, and they named her Helen Keller. Although she was born healthy, बहुत healthy वो baby हुई थी, but one day Helen Keller got very high fever. लेकिन एक दिन उसको बहुत तेज़ fever हो गया, fever आ गया, and she was not recovering from it. और उसकी जो हेल्थ थी वो डाउन जा रही थी, वो उससे रिकवर नहीं कर पा रही थी. हर हेल्थ वॉज गोइंग डाउन विद ईच पासिंग डे, एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू गेट हर बेटर. Everyone in the family tried to help her in every possible way, but all they could say, "There is nothing more we can do." That means they were losing hope. सबने उसकी जो फैमिली में कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, उसको ठीक करने के लिए कुछ कर सकें, लेकिन फाइनली दे सेड द बेबी मे नॉट लिव लॉन्ग. दे वर लूजिंग होप. Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. The child could not see or hear. The baby grew into a little girl. Her parents felt sorry for her. Helen often cried and held on to her mother. "Give the poor child what she wants," her father would say. Now, dear children, Helen survived that fever. She became better. She lived after her illness. But there was something very wrong about her. वो अपनी इलनेस के बाद थोड़ा ठीक हो गई, लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ गलत हो गया था जो उसके पेरेंट्स को लग रहा था. Her mother suspected some change. She was not behaving properly like earlier. And finally they figured out that the child is no longer the same. She had lost her sight and sense of hearing. Means she could not see or hear. अब उनकी जो बेटी थी ना तो वो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उसके पेरेंट्स फिर उसके बारे में वरिड हो गए. When the baby girl grew into a little girl, what happened? They start worrying about her. They were felt very sorry, very sad about her. They were always worried. Most of the time she held on to her mother. Most ज़्यादा
टाइम क्या होता था कि वो अपनी मदर को हमेशा होल्ड करके रखती थी, उन्हें पकड़े रहती थी, एंड शी वॉज ऑलवेज क्राइंग, एंड हर हेल्पलेस फादर वुड से प्लीज़ गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स। और उसके जो हेल्पलेस फादर थे कुछ नहीं कर पाते थे कि अब क्या करें, तो कहते थे कि जो भी इस बच्चे को चाहिए, मतलब व्हाट शी वांट्स मीन्स वॉट एवर शी इज़ डिमांडिंग, जस्ट गिव इट टू हर टू काम हर डाउन, है ना, सो दैट शी मे गेट हैप्पी। Though Helen couldn't hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said, and added, the problem is how can we reach her? She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair, her clothes. Now, as children, you know that Helen was not able to see or hear. ना तो वो देख सकती थी ना सुन सकती थी Helen. Still, she was a bright student. Her mother understood. लेकिन वो एक bright girl थी, bright child थी, क्योंकि उसकी mother सहमत नहीं होती थी, अग्री नहीं करती थी। वो कहती थी हेलन बहुत स्मार्ट है, एंड हर मदर अंडरस्टूड हर प्रॉब्लम ऑफ बीइंग नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड नीड्स। जो उसकी मदर थी उनको पता था कि ये अपने आप को इसने अंदर लॉक, मीन्स शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, मीन्स शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, है ना। दे हैड अ प्रॉब्लम दैट हाउ कैन वी रीच आवर चाइल्ड। Helen began to grow wild, and with each passing day, she began to behave wildly like uncivilized people. और वो जैसे ही हर दिन के साथ जैसे वो बड़ी हो रही थी, वो जंगली जैसे बिहेव करते हैं, बिल्कुल जैसे समझ नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं, कैसे भी बिहेव कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं। शी डिड नॉट अलाउ एनी वन टू कॉम हर हेयर, और वो किसी को भी अपनी हेयर कॉम नहीं करने देती थी, है ना। और शी वॉज ऑफन क्राइंग, वो हमेशा रोती रहती थी। तो इस तरह का वो जो अनयूजुअल चाइल्ड होता है, अनलाइक अदर चिल्ड्रन, इस तरह से हेलन का बिहेव हो गया था। Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents thought that they should find a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. Now, as she grew up, she started behaving wildly. She wore dirty clothes and got angry and lay on the floor kicking her feet. और कई बार वो इतने उसके जो क्लोथ्स थे बहुत डर्टी होते थे, वो ज़्यादातर गुस्से में रहती थी हेलन, और कई बार वो फ्लोर पर लेट जाती थी, एंड शी किक्ड हर फीट. Her parents thought that they should find a teacher for her, and finally her parents decided to find a teacher, to get a teacher for her, and then a young teacher named Miss Sullivan agreed to teach Helen. She gave Helen a doll. Miss Sullivan gave Helen a doll. D-O-L-L spells doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. She made the letters with special hand signs. Miss Sullivan gave Helen doll and taught her its spelling. जो मिस सलिवन थी, जो टीचर थी हेलन की, उन्होंने उसको क्या दी, एक डॉल दी, एंड टॉट हर इट्स स्पेलिंग बाय मेकिंग लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस. Helen copied her teacher and spelled D-O-L-L too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sullivan. She was strict but kind. Now, so children,
हेलन फॉलोड हर टीचर, हेलन जो है अपने टीचर को फॉलो करने लगी, जो भी वो उसको सिखाती थी, जिस तरह से सिखाती थी वो उसको सीखने की कोशिश करने लगी. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है. जो भी वो सिखाने की कोशिश करती थी वो उसको फॉलो करने की ट्राई करती थी. शी लाइक्ड मिस सलिवन, और उसको जो मिस सलिवन थी वो उसको अच्छी लगती थी, है ना. शी वॉज स्ट्रिक्ट टीचर बट शी वॉज एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी काइंड. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट to make Helen understand, and she learned to spell a lot of words with her. Sullivan was kind but a strict teacher. She tried her best to make Helen understand so that she can identify different objects with those movement of finger on her hand or wrist. जो भी वो उसकी रिस्ट पर या हैंड पर अपने फिंगर मूवमेंट से जो भी स्पेलिंग्स को लिखती थी, जो भी ऑब्जेक्ट्स उसको आइडेंटिफाई करने की वो उसको मतलब कोशिश करती थी कि किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, है ना. तो हेलन जो थी वो बहुत अपनी जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी. शी वॉज ट्राइंग हार्ड टू मेक हर अंडरस्टैंड everything. One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled WATER. Suddenly Helen understood that water, WATER, meant something wet running over her hand. Now what happened one day her teacher made Helen पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर. एक बार हेलन जो उसकी टीचर थी मिस सलिवन, उन्होंने क्या किया कि हेलन का हैंड चलते हुए बहते हुए पानी में रख दिया. शी पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एंड एज हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर हर टीचर स्पेल्ड WATER on her hand, and Helen quickly understood that WATER, this is a word which means something wet. और जैसे ही उन्होंने उसका हाथ जो था पानी में रखा बहते हुए पानी में, और उन्होंने किस चीज़ की स्पेलिंग बोली, वाटर की, WATER. और उसी समय मतलब उसको समझ में आ गया हेलन को कि वाटर का क्या मीनिंग है, कि कुछ वेट, कुछ गीला, है ना, तो उसको वाटर कहते हैं. ओके. She understood that words were the most important thing in the world. Words would tell her everything she wanted to know. Now, dear kids, Helen knew that WATER, this is a word which means something wet running over her hand. With this incident, she also understood that words are very important things in this world. That means words will tell her everything she wanted to know. She understood the importance of words. अब उसे शब्दों का महत्व पता चल गया था, as her way to understand the world around her and to know everything she wanted to know. Okay children, hope you liked the story of Helen Keller. Thank you very much. Have a wonderful day.